जैम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज 8 नंबर में आए हैं। इफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ L1 में है इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द अनदर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ द विड्थ L2, देन द रेशियो L1/L2 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सो द एनर्जी लेवल के हिसाब से हम लोगों को सोचना है। एनर्जी लेवल इक्वेशन है इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल। एनर्जी इक्वेशन इसका कुछ है En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर e स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, where n is a quantum number 1 to n, h is the reduced Planck's constant, ठीक है, एंड m क्या है, मास है, l क्या है, width of the potential well है। So let's denote the ground state energy of the first potential as E1, ground state energy E1, and the second excited state of the second potential energy को ले लेते हैं E2। तो यहाँ पर E1 भैया E2 के साथ सेम है। So using the equation of the energy level in the infinite potential wall हम लोग क्या कर सकते हैं, n equal to 1 and this is this pi square e square by 2ml square, so at n equal to 3 में होगा स्क्वायर e square by 2ml square. Simplifying the equation, L1 square by L2 square equal to n equal to 3 square equal to 1 का square, so like a 9/1. So taking the square root of both sides, we have L1/L2 कितना होगा, काफी आसान 3/1. So this is this, so opposite ratio 1/3. Option number B is correct.